Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 8. How are you all? I hope you all are doing well at your homes in this third wave of the pandemic COVID-19. Take very good care of yourselves, stay home, stay safe, and continue your online learnings. So from today, from Satqain Education Services, we are going to start online the second session of our chapter number 13 of the novel Matilda, and today is the revision of session 2. So let's begin today's class. All right, now class 8, so let's start the chapter. So as you know, in the last session, the Miss Honey, how she has informed the students about that Trunchbull would attend the class and what were her attitudes when she entered the class, and she asked the questions and spellings from Nigel, and she gave her the punishment, and she also told that Miss Honey should change her method of teaching. And then in the end she told that let's come to the multiplication. Now in this chapter she has to start taking tests of the students about the multiplication. So let's start. The Trunchbull had returned to her place in front of the class, and her diabolical gaze was moving slowly across the rows of tiny pupils. "You," she barked. "Point at a small boy called Rupert in the front row. What is 2 sevens?" तो वो आ गई थी अपनी जगह पे फ्रंट पे वापस, और घुमा घुमा के लोगों बच्चों को देख रही थी। बच्चों की नज़रों से तो एक बच्चा था रूपर्ट, तो उसे उठाया अपने रो से, फ्रंट रो से, और कहा कि 2 sevens कितने होते हैं? 16, Rupert answered with foolish abandon. The Trunchbull started advancing slow and soft-footed upon Rupert in the manner of a tigress stalking the small deer. Rupert suddenly became aware of the danger signals and quickly tried again. "It's 18," he cried. 2 sevens are 18, not 16. 2 sevens उसने जवाब दिया रूपर्ट ने कि it's 16, 16 होते हैं, और क्योंकि definitely it was the wrong answer, so the Trunchbull slowly moved towards Rupert. जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे टाइगर जो है किसी डियर के ऊपर अटैक करने के लिए स्लोली मूव करता है, सो रूपर्ट वाज अवेयर ऑफ द डेंजर, उसको खतरे का एहसास हो गया, तो उसने ही चेंज हिज आंसर, ही सेड नो, 2 sevens आर 18, 2 sevens 18 होते हैं, 16 नहीं। फिर क्या कहा उन्होंने? "You ignorant little slug," the Trunchbull bellowed. "You witless weed, you empty-headed hamster, you stupid glob of glue." She had now stationed herself directly behind Rupert, and suddenly she extended a hand the size of a tennis racket and grabbed all the hair on the Rupert's head in her fist. Rupert had a lot of golden colored hair. His mother thought it was beautiful to behold, and took a delight in allowing it to grow extra long. The Trunchbull had as great a dislike for long hair on boys as she had for plaits and pigtails on the girls, and she was about to show it. She took a firm grip on Rupert's long golden tresses and her giant hand, and then, by raising her muscular right arm, she lifted the helpless boy clean out of the chair and held him aloft. तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको बातें सुनाने लगी, उसको डांटने लगी, "तुम फूलिश हो, सर खाली है", ये वो इस तरह का। फिर आके जो है वो बिल्कुल रूपर्ट के सामने खड़ी हो गई और अपना बड़ा सा हाथ अचानक उन्होंने बढ़ाया। एग्जाम्पल दिए कि जैसे कोई रैकेट हो टेनिस का, और उन्होंने जो है रूपर्ट का सर पकड़ लिया और उसके जो बाल थे वो खींच पकड़ लिए। तो रूपर्ट हैड अ लॉट ऑफ गोल्डन हेयर, उसके जो बाल थे वो गोल्डन कलर थे, काफ़ी सारे बाल थे उसके। मदर्स वगैरह को जो है वो अच्छे लगते थे, कि तो उन्होंने उसको बढ़ने दिया। तो ट्रेंचबुल को जो है ये पसंद नहीं था। शी हैड अ ग्रेट डिसलाइक, क्योंकि प्लेट्स, चोटियाँ और वगैरह जो लड़कियां बांधती थी, कहने लगी लड़कियों के लिए सही है, तो बॉयज़ पे नहीं होना चाहिए। तो शी टुक अ फर्म ग्रिप ऑन रूपर्ट्स लॉन्ग गोल्डन ट्रेसेस, यानी बालों के ऊपर उन्होंने ज़ोर से पकड़ा उसको, और बाय रेजिंग हर मस्कुलर आर्म, अपने ताकतवर हाथ से जो है उन्होंने उसको
बालों से पकड़ के खींच लिया और उसको चेयर से निकाल कर अपने हाथों में उठा लिया, बालों से पकड़ कर खींच लिया. Rupert yelled. He twisted and screamed and kicked in the air and went on yelling like a stuck pig. And Miss Trunchbull bellowed, 2 sevens are 14. 2 sevens are 14. I'm not letting you go till you say it. तो उन्होंने इसको क्योंकि सर से बालों से पकड़ के उठा लिया था अपने हाथों में, तो वो घूम रहा था, नीचे आने की कोशिश कर रहा था, पाँव चला रहा था, लेकिन जो है उन्होंने उसको नहीं छोड़ा और गुस्से से कहें कि 2 sevens are 14 होते हैं और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी इस तरह से जब तक तुम इसको रिपीट नहीं करोगे. From the back of the class, Miss Honey cried out, Miss Trunchbull, please let him down. You are hurting him. All his hair might come out. तो पीछे से क्योंकि मिस हनी देख रही थी इस अमल को और उनको इस तकलीफ़ का अंदाज़ा था बच्चे की, तो उन्होंने कहा कि मिस ट्रंचबुल आप इसको छोड़ दें, आप इसको तकलीफ़ पहुंचा रही हैं, ऐसा ना हो इसके बाल वाल निकल जाएं, इसको और तकलीफ़ हो. Okay, then the Trunchbull said, and well it might if he doesn't stop wrangling, snort a Trunchbull. Keep still, you screaming worm. कहती हाँ वाकई अगर ये इस तरह से मचलना झूमना बंद ना करे तो वाकई इसके शायद बाल गिर जाएंगे, निकल जाएंगे. तो keep still, you screaming worm, वो कहती है सीधे रहो. It really was a quite extraordinary sight to see this giant headmistress dangling the small boy high in the air, and the boy spinning and twisting like something on the end of a string and shirking head off. तो कह रहे थे बड़े अजीब सी कुछ मंजर था ये देखना कि इतनी बड़ी हेडमिस्ट्रेस ने छोटे बच्चे को बाल से उठाया हुआ है और वो घूम रहा है, तड़प रहा है, जैसा लग रहा था जैसे किसी तार के आगे किसी धागे को या किसी चीज़ को लगा दिया हो. Say it, bellowed the Trunchbull. Say 2 sevens are 14. Hurry up, or I'll start jerk you up and down, and then your hair really will come out, and we'll have enough of it to stuff the sofa. Get on with it, boy. Say 2 sevens are 14, and I'll let you go. तो वो कहती हैं कि तो बोल दो तुम 2 sevens are 14, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना मैं तुम्हें बालों से पकड़ के ऊपर नीचे हिलाना शुरू करूंगी और तुम्हारे बाल जो है वो सारे निकल जाएंगे. मिसाल देने लगी, इतने बाल है तुम्हारे कि हम अपना सोफा आराम से भर लेंगे. तो कहती है, तो फिर बच्चा कहता है कि 2 sevens are 14. गैब्स्ट घबराते हुए सांस फूल के अटक के वो बच्चा कहता है, whereupon the Trunchbull, ठीक है, to her words, open her hands and quite literally let him go. He was a long way off the ground when she released him, and he plumped to the earth and hit the floor and bounced like a football. तो वहीं से फिर उसने वो अपने वादों की पकी थी, अपना मुट्ठी या हाथ खोला उन्होंने, बच्चा वहीं से नीचे ज़मीन पर गिरा जैसे कोई फुटबॉल हो, और कहती हैं कि भाई सीधा खड़े हो जाओ. Rupert got up and went back to his desk, massaging his scalp with both hands. फिर रूपर्ट उठ के अपने डेस्क पे चला जाता है और अपने सर को सहलाता हुआ वहाँ पे जाकर बैठ जाता है. The Trunchbull returned in the front of the class. The children sat there hypnotized. None of them had seen anything quite like this before. तो बच्चे जो है बड़े घबरा गए थे, हिप्नोटाइज हो गए थे, तो वो वापस जो है अपने फ्रंट पर आकर मिस खड़ी हो जाती हैं. It was better than a pantomime, but with no big difference. In this room there was an enormous human bomb in front of them, which was liable to explode and blow someone बिट्स एनी मोमेंट. तो ये बड़ी अजीब सी कहानी थी कि वो ट्रंचबुल इतनी बड़ी एज ए बम की तरह खड़ी हुई थी जो किसी वक्त भी एक्सप्लोड हो सकता है, किसी को भी उड़ा सकता है. द चिल्ड्रंस आर अवेटेड हेडमिस्ट्रेस, बच्चों की आंखें जो हैं बेचारे वो उनको गौर से देख रहे थे परेशान. आई डोंट लाइक स्मॉल पीपल, शी वॉज सेइंग. उन्होंने कहा कि मुझे छोटे लोग जो हैं वो पसंद नहीं है. स्मॉल पीपल शुड नेवर बी सीन by anybody. They should be kept out of the sight in the boxes like hairpins and buttons. I cannot for the life of me see why children have to take along to grow up. I think they do it on purpose. वो कहती हैं कि भाई वो बच्चों छोटे लोगों को जो है नहीं नज़र आना चाहिए, उनको हेयर पिन्स और बटन्स की तरह बॉक्सेस में रखना चाहिए. बच्चे जल्दी बड़े क्यों नहीं होते, मुझे लगता है जानबूझ के ऐसा करते हैं. Another extremely brave little boy in the front row spoke up and said, but surely you were स्मॉल पर्सन वंस ट्रंचबुल वॉन्ट यू. तो फिर एक बच्चा जो कि फ्रंट रो में बैठा है वो थोड़ी बहादुरी दिखाता है, कहता है कि आप भी तो कभी छोटी थी है ना. I was never a small person, she snapped. I have been large all of my life and I don't see why others can be the same way. वो कहते मैं तो कभी छोटी रही नहीं, यानी साइज़ में मैं तो हमेशा बड़ी रही और मुझे हैरत होती है कि बाकी लोग भी इस तरह क्यों नहीं होते. But you must have started out as a baby, the boy said. तो आप कभी बच्ची तो छोटी बेबी रही होंगी.
Me, a baby, shouted the Trunchbull. How dare you suggest such a thing? What cheek, what insolence, what's your name, boy, and stand up when you talk to me. तो ये सुनकर उनको गुस्सा आया, फिर वही बच्चे को डांटने लगी और कहने लगा कि जब भी मुझसे बात करनी हो तुम खड़े हो जाओ और फिर उसका नाम पूछती हैं. The boy stood up. My name is Eric Eng, Miss Trunchbull. वो अपना नाम बताता है. Eric what? Trunchbull shouted. Ink, the boy said. Don't be ass. There's no such name. तो कहती है ये कैसा नाम है, ऐसा तो कोई नाम है ही नहीं इनके नाम से. तो फिर बच्चा कहता है लुक इन द फोन बुक यूल सी माई फादर देयर अंडर इंक. कहते हैं आप फोन बुक देखें, मेरे फादर का नेम आपको ये इंक के नाम से नजर आ जाएगा. वेरी वेल देन द ट्रंचबुल सेड, यू मे बी इंक यंग मैन, बट let me tell you something, you are not indelible. I'll very soon rub you out if you try getting clever with me. Spell what? तो कहती ठीक है, तुम अगर हो इंक नाम होगा तुम्हारा तो ये मैं समझना कि तुम मैं रब नहीं कर सकती. अगर मेरे साथ ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा नाम रब कर दूंगी, यानी स्कूल से निकाल दूंगी. फिर वो कहती हैं what स्पेलिंग करो. I don't understand, Eric said. What you want me to spell? तो कहते मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या चाहती हैं कि मैं किस वर्ड को स्पेल करूं. And then Trunchbull says, spell what, you idiot. Spell the word what. कहते बेवकूफ़, जो वर्ड what होता है उसको स्पेल करो. तो वो स्पेल करता है WOT. Answering too quickly, there was a nasty silence. तो जल्दी में उसने आंसर कर दिया तो एकदम खामोशी हो गई. I'll give you one more chance. Trunchbull ने कहा मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ. Not moving. Yes, I know, Eric said. I got an H in it. WHOT. वो कहता है अच्छा हाँ मेरी समझ में आया, उसमें H लगाना था. WHOT. ये तो आसान है. In two large strides, the Trunchbull went behind Eric's desk, and there she stood, a pillar of doom towering over the helpless boy. Eric glanced fearfully back over his shoulder at the monster. I was right, wasn't I? He murmured nervously. फिर ट्रंचबुल ने जो दो बड़े बड़े कदम लिए और जो है उसके पीछे एरिक के जाकर खड़ी हो गई जैसे कोई टावर हो. और बेचारा बच्चा जो है उनको अपने कंधों के पीछे से देख रहा था और उसने फिर पूछा मेरा आंसर या मेरा जवाब सही है ना. You were wrong, the Trunchbull barked. In fact, you strike me as the sort of poisonous little Pokemon that will always be wrong. You sit wrong, you look wrong, you speak wrong, you are wrong all around. I will give you one more chance to spell right what. वो कहती है कि नहीं तुमने गलत आंसर दिया है, तुमने जहरीले हो ये हो वो. बच्चे को वही डांटने लगी, तुम बैठते गलत हो, न दिखते गलत हो, तुम पूरे के पूरे गलत हो. तो कहती है लास्ट चांस मैं दे रही हूँ, उसको सही करके दिखाओ. एरिक बहुत हेजिटेट हुआ. ही हेजिटेटेड, देन ही सेड वेरी स्लोली, इट्स नॉट WOT and it's not WHOT. I know, it must be WHOTT. वो कहता है अच्छा वो ऐसे भी नहीं है, WHOT भी नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से WHOTT होगा. Standing behind Eric, the Trunchbull reached out and took hold of the boy's two ears, one with each hand, pinching them between four fingers and thumb. तो फिर वो जाती हैं एरिक के पास और उसके दोनों कान पकड़ के खींचती हैं और दोनों थम से. आओ, एरिक क्राइड, आओ, यू आर हर्टिंग मी. फिर वो कहता है कि आप जो है मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसा ना करें. आई हैवंट स्टार्टेड येट, ट्रंचबुल सेड ब्रिस्कली. फिर उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है तुम्हारे साथ. And now, taking a firm grip on his two ears, she lifted him bodily out of the seat and held him aloft. फिर उन्होंने वही किया, दोनों कानों से पकड़कर जो है बच्चे को उठा लिया, अपने चेयर से उठा के उन्होंने उसको हवा में उठा लिया दोनों कानों से. The Rupert before him, Eric squealed the house down. जैसे कि उन्होंने रूपर्ट को एरिक से पहले उठाया था. From the back of the classroom, Miss Honey cried, Miss Trunchbull, don't, please let him go. His ears might kind of come off. तो वही मिस्टर हनी जो पीछे खड़ी हुई थी बेचारी, वो देख रही थी बच्चों के साथ इस तरह की पनिशमेंट हो रही है. फिर वो यही कहती हैं कि छोड़ दें इसको, ऐसे नहीं इसके कान निकल जाए. They will never come off, the Trunchbull shouted. I discovered through long experience, Miss Honey, the ears of small boys are stuck very firmly to their head. तो मिस हनी से कहती है कि ऐसा नहीं होगा, उनके कान नहीं निकलेंगे. मैंने एक्सपीरियंस किया है कि छोटे लड़कों के जो कान होते हैं उनके फोरहेड, उनके सर के साथ बहुत फर्मली यानी बहुत मजबूती से चिपके हुए होते हैं. तो नहीं मानी वो इस बात पे.
Okay, class 8. So that's all for your today's session. Session number 2 of chapter 13, Matilda. And as you know that what you have studied today and how the Miss Trunchbull has taken the test of the students. First, she has taken the multiplication test. She has asked about some tables, and when they have given the wrong answer, she had given the punishment. First, she has taken the boy with the hair. She held the hair in her hand and took up in the air. Then she started asking the spellings again. Then she started asking the spelling again. So she asked the spelling of what. The child, first of all, he gave the wrong spelling of what, and then he made a correction after the this principal has told him the correct thing. So this is all what happened today in the session about the class activity, the test taken by the principal. The rest will be continued in the next session, inshallah. Now these are your home assignment. There are 2 slides of reference to context that you have to do in your homework copy of English text. So see you in the next class with the next session, inshallah. Till then, take care of yourselves, stay home and stay safe. Allah Hafiz.